Another thing, and that is also on the bank of the Yamuna. Sudas was an important king at the time of Rig Veda, and Trasru were his companions, and both got victory over Asura, and then in the pleasure, in the happiness they they glorified Indra with these things, horses, cow, etc. कालिया नाग को उन्होंने मारा था, पानी को गंदा कर रहा था. यहाँ पर भी आप एलोगोरी को समझना चाहिए. कालिया नाग का मर्दन किया उन्होंने, नॉट उनका वध नहीं किया. सबका वध कर रहे हैं, पूतना का वध कर रहे हैं, उसका मर्दन किया. मर्दन का मतलब होता है उसको इंजर्ड किया, उसको हर्ट किया, और उसको बोला यहाँ से हटो उधर जाओ, यहाँ से हटो उधर जाओ. मतलब ये जो विलेज है, विलेज साइड में जो नदी बह रही है, वहाँ पर प्रदूषण नहीं होना चाहिए. नो प्रदूषण के नाले इत्यादि को वहाँ पर मिला देते हैं शहर के बीच में, वो गलत है. Namaskar to everyone, and it is my privilege that I am here on the invitation of Miss Neera Mishra ji, who is the chairperson of Guru Draupadi Trust, and it is a very special occasion that she is doing a conference of one day on Yamuna, both literary side also and other technical side also. So I am the speaker of who will be taking the literary side, and the subject, as you can know, is Vedas and Puranas, Yamuna in the Vedas and the Puranas. Few things has to be discussed before that. Vedic Aryan or Vedic seers were actually the children of nature, and they used to adorn nature, and due to three causes. First is fear, the second is surprise, and the third is regard. And gradually they have assigned divinity to all natural powers, natural elements and natural activities. Accordingly, mountains, rivers, trees, clouds, sky, earth, water, plants, sun, moon, etc. All powers were assigned different divinities. And you all know that its extension we see in the Puranas, and later up to today also we can see the extension of that divinity. Firstly, I will take what is the attitude of seers toward river. So it is very important to know how Vedic seers were looking after rivers. And there is a hymn in the third mandala of the Rig Veda, which is very important, and there in the two rivers of that time are talking with the Vishwamitra Rishi. What happened? Vishwamitra has to cross both the rivers, the sangam of both the rivers, and rivers were Vipasa and Shatudri. So he asked them to give the way, because he has a huge chariot and full of stuff for the sacrifices. So both the rivers assigned, give the permission to cross that sangam, and with a promise. That is very important. Both rivers asked, will your future generation will also be careful about us? They will also ask a way from us, and then they will cross the river, or they will destroy as we are doing nowadays. So it is the attitude of the seers toward our rivers. Then region of the Vedic Aryan, it is just a map, and where you can see different rivers. 7 rivers are very important in the Rig Veda. Sapta Sindhava term is used many times, and in the Sapta Sindhu, as you know, 5 rivers of Punjab are there: Jhelum, Chunav, Ravi, Vyas, Satluj. Then Sindhu Nadi is the 6th one, which is called Indus in English, and the 7th river is Saraswati.
So these 7 rivers, the region of these 7 rivers was the place where Vedic Aryans used to live, and they have composed Vedic literature. But after this research about Yamuna, I have reached on the conclusion that no, they were not limited up to this region only. And it is a very important conclusion which I found that that region is not only the region of Vedic Aryans, but that was extended, that was is spread out up to the region of Ganga Yamuna Pradesh. So Yamuna is a very important river of Bharatvarsha, and it originates from Gangotri and goes up to the Ganga, merges in Ganga at Prayagraj. Yamuna is the second largest tributary of Ganga. She runs crossing known cities and states of India as Haryana, Punjab, Delhi, etc. And she merges many rivers into herself as Chambal, Sengar, Choti Sindhu, Betwa, Ken. She travels 1376 kilometer on Indian land. The literature which has been provided, this is mentioned there also. She is the longest associate river of Ganga. This is the present situation. 5 streams of Punjab, this has been already discussed. And later in the later part, I have given few rivers which are flowing on the western side of the Sindhu. And those rivers are at present in the Punjab, in the Pakistan or in the Afghanistan. So I am not naming them as Kubha, Gomati, Gurmu, Subastu, etc. West of the Indus. How this river got the name Yamuna? It is also important to know, and it is interesting also. In the Vedic text, there is a etymology, science of etymology text that is called Nirukta, and that is written by Yask. So Yask has given the etymology of the Yamuna term, and he has tried to derive it from 2 ways. First is Yamuna prayuvati gachatiti va, pravyutam gachatiti va. या तो यमुना प्रयुवती है, प्र प्लस युवती, युवती में यू रूट है, यू धातु है, वो प्रयुवती की तरह गच्छति. प्रयुवती का मतलब, युव का मतलब मिक्सिंग अप होता है, मर्जिंग अप होता है. सो इसका मतलब हुआ था यमुना इज कॉल्ड यमुना बिकॉज शी फ्लोज मिक्सिंग अप विद द अदर रिवर्स, एंड जस्ट वी हैव सीन few rivers are mixing in her. Second is Viyutam. Yutam means who is quietly going on, who is going quietly. Still he has huge waves, but she has keeping herself in control, and she is flowing very quietly, very calmly, very peacefully. So third etymology is not given by Yask, but it can be derived from the dhatu yam. Yam means sanyam, uparame, yam uparame. So the other name of Yamuna is Yami, and Yami names come from Yam dhatu. Accordingly, we will take the meaning that Yamuna is called Yamuna because she is very controlling river. She controls herself and the others. Then Keith and MacDonald has given another etymology, and he says because she flows parallel to Ganga many times, that's why it is called Yamuna. So 4 etymologies I have given, and you will see that the name of the Yamuna is very appropriate. Accordingly, what our seers has the mind at that time, because our name are not fitting on ourselves, because our parents were not seers, but Nadi name is fitting on her.
Yam Yami Samvad Sukta. It is 10th mandal and 10th number hymn. And there is a dialogue between Yam and Yami and both are twin by, according to the name. आप देखो ना यहाँ पर भी नाम कितने अच्छे रखे हुए हैं. एक भाई का नाम है यम, बहन का नाम है यमी. दोनों साथ में पैदा हुए हैं. इनके पिता सूर्यदेव हैं और माँ सरन्यु है. वेद के मुताबिक पुराणों में थोड़ा सा नाम बदला है, बट वो भी वही है, नाम बदला है. तो ये जो यम और यमी के नाम है, मैं कह रही थी बिल्कुल परफेक्ट एक दूसरे पर लगते हैं. दोनों एक दूसरे को संयम सिखा रहे हैं. होता क्या है कि यमी starts loving Yam. She doesn't care that he is my brother, but she says to Yam that I love you and you get married with me. But he says no, it cannot be done because it has never been done. So will you do the work which has never been done? So she says no, I will not do that work. Then he says brother and sister can't marry. And that is the lesson, that is the teaching of this sukta. Western scholars have commented on this sukta that in Vedic period, brother and sisters used to get married themselves. They take this meaning. But it is not correct. The meaning I have told is in Vedas what happened in the mantras. It is a big topic, but in short, I can say that in Vedas nothing has been said directly. Everything has been said indirectly, symbolically, and you have to think about that, and then you will reach on the exact meaning of that hymn or the word or the passage, anything. So the daughter of the Surya, and later she will be called Yamuna, who controls her passion. That is why she is here. She is Yami because she controls passion, and in later she is Yamuna because she controls her waves and tarange. In the Rig Veda, we find 3 places where the term Yamuna is used. Please note down that the term is used there, but it doesn't mean that you will find the detail about Yamuna. Rishi is not talking about the detail of Yamuna in these 3 mantras. He is only referring the name, and you have to draw the conclusion according to that. This is research, and I tried that. The first mantra is from the 5th mandala, and it says, in English is meaning I am giving, and this meaning is coming from the translation of H.H. Wilson. Bestow upon me hundreds of cattle, wealth of horses upon the bank of the Yamuna. And the indication is here that on the banks of the Yamuna, sacrifice were used to done by the Vedic seers. The second mantra talks about the another thing, and that is also on the bank of the Yamuna. Sudas was an important king at the time of Rig Veda, and Trasru were his companions, and both got victory over Bhed Asura, and then in the pleasure, in the happiness they granted, they glorified Indra with these things, horses, cow, etc., etc. So the conclusion may be drawn here that Vedic people used to do battles also on the bank of the river. So river Yamuna was an active river for them at the time of the Rig Veda. Firstly, I told that it was sacrifices which they used to conduct there, and now battle used to be there. So that was the reason I told in the a few minutes back that Yamuna was not Vedic civilization was not limited in the Sapta Sindhu area, but it goes up to the place of Ganga Yamuna region also.
These are the three indications which I am drawing from that. And the third one is very well known to all. Gange, Yamune, Saraswati, Shatudri. 10 rivers are numbered here, listed here, and Yamuna is on the second place. And only this conclusion can be drawn that it was an important river for the Rig Vedic people. I will shortly in the other Vedic text what is the situation about the name Yamuna. Are they referring name Yamuna? Because when I was searching these texts, I was very much curious about to know that is Yamuna name is coming in this text or not. Why? Because Saraswati has been later Lupta Saraswati, Adarshanam Lokaha. उसका लोप हो गया था, वो दिखती नहीं थी शतपथ ब्राह्मण और उसके बाद के ग्रंथों में। सरस्वती विद्या की देवी बन गई, वाक देवी बन गई, नदी नहीं रही। तो यमुना तो ऐसा नहीं हुआ ना, ऐसा सोचकर मैंने वो ग्रंथ देखे और अच्छा ये रहा कि अथर्ववेद में एक मंत्र मिला, वहां पर भी यमुना को यमुना के रूप में, यमुना की बात नहीं हो रही है, वहां पर भी संदर्भ में यमुना आ रहा है। वो कहते हैं कि अंजन जो है, आंखों का जो काजल है, आप देखिए जरा हमारे वैदिक ऋषियों की बात, जो काजल है आंखों का वो यमुना से प्रोड्यूस होता है, और दूसरा काजल काले पर्वत से प्रोड्यूस होता है। काले पर्वत से और यमुना से कज्जल प्रोड्यूस होता है, अंजन प्रोड्यूस होता है। अब इसका अर्थ आजकल लेने वाले तो ले लेंगे कि वो तो ऋग्वेद काल में भी उसमें से मैल निकलता रहता था, पॉल्यूशन करती रहती थी वो तब भी। तो यहाँ पर मेरा कहना है कि ऋषियों की दृष्टि बहुत तेज है। They know that the color of the Yamuna is blackish. That is why they are giving this mantra, and allegorically they are explaining that Kajal or Anjan should be mixed with the activity of Yamuna, which is blackish water. In the Shatpath again, name is there, Yamuna, and Bharat is doing, he is keeping few horses for Indra. So must be there any sacrifice by the side of Yamuna. This indication can be drawn there. So like that, few Vedic texts have references of Yamuna later also. So Yami, remember Yami was in Rig Veda, and she was asking brother to marry with her. Then your brother said, you marry another man. And the story connects here from Puranas, that in the Puranas she is married to Krishna, as you were telling there. So Krishna is her choice, and that is why she is called Krishna. And Krishna meaning, and another meaning blackish one also is the meaning. So again that blackish, उसकी जो आभा है वो blackish है, ब्लैक पानी बह रहा है ऐसा नहीं है। और गंगा यमुना के जो संगम में गए हुए, आज कोई आए भी हुए हैं यहाँ पर, वो बता सकेंगे कि पानी एक यमुना का काला, थोड़ा हल्का सा काला आता है, गंगा जी का सफ़ेद आता है, और दोनों मर्ज होते हैं, दोनों मिलते हैं, श्याम वर्ण होता है। तो इसीलिए दूसरा नाम उसका श्यामा भी है, तीसरा नाम उसका कालिंदी भी है। तो ये सारे नाम उसके कलर और उसकी बात करते हैं। उसकी दो माँ हैं, संज्ञा और छाया। सूर्य उसके पिताजी हैं, और एक पिता और भी बोले जाते हैं, विश्वकर्मा। और यमराज जो है वो आपको पहले ही बताया गया, जो यम था वो लेटर यमराज बन जाता है, कंट्रोलर ऑफ मृत्यु है, वो मृत्यु के देवता हैं, सभी को पता है। और यमुना जो है वो यमी बाद में यमुना बन जाती है। इस तरह से पुराण जो हैं वो वेद में जो बातें कही गई हैं उनको ही अपभ्रंहण करते हैं, उन्हीं का विस्तार करते हैं, उन्हीं को एलोगेरिकली पर्सोनिफिकेशन के द्वारा या स्टोरी के माध्यम से बड़ा कर बताते हैं। फैमिली की बात आप कर चुके हैं। 2 माँ से 9 बच्चे उनके हुए, और 9 बच्चों के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। वैसे बहुत से नाम आपको पता है और आप इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे शनिश्चर हो गए,
शनि देव हो गए, या 2 अश्विन कुमार हैं, या मनु हैं, सावर्णी है, और इस तरह से ये नाम यहाँ पर लिखते हुए। ताप्ती नदी जो है वो भी उसकी बहन है, जो यमुना की बहन ताप्ती है। रेवंत हैं, और बस इतने लोग हैं, 9 लोग हैं ये। अच्छा, यमुना का नेचर फ्लिंकरिंग बताया गया, फ्लिंकरिंग। शी इज बाय नेचर फ्लिंकरिंग, हिलती रहती है, कांपती रहती है। सो इसके लिए पुराण में कहा गया कि जब वो पैदा हुई, एट द टाइम ऑफ हर बर्थ, संज्ञा द मदर हैज लुक्ड हर विद शेकी आइज, एंड दैट्स व्हाई शी गॉट नेचर ऑफ shaking all the time. Pandava's capital in Mahabharata is Indraprastha, and that is on the bank of Yamuna. Krishna's association is very important, and Yamuna got so much respect, I think, due to the association of Krishna, because Krishna was his Krishna ji uske शादी भी हुआ, और कृष्ण जी यमुना के किनारे खेलते थे। बहुत सारी कहानियाँ जितने भी बचपन की उनकी लीलाएं हैं सब यमुना के तट पर हुई। और कालिया नाग को उन्होंने मारा था जो पानी को गंदा कर रहा था। यहाँ पर भी आप एलोगोरी को समझना चाहिए। कालिया नाग का मर्दन किया उन्होंने, नॉट उनका वध नहीं किया। सबका वध कर रहे हैं, पूतना का वध कर रहे हैं, उसका मर्दन किया। मर्दन का मतलब होता है उसको इंजर्ड किया, उसको हर्ट किया, और उसको बोला यहाँ से हटो उधर जाओ, यहाँ से हटो उधर जाओ। मतलब ये जो विलेज है, विलेज साइड में जो नदी बह रही है, वहाँ पर प्रदूषण नहीं होना चाहिए। नो प्रदूषण कैन, नाले इत्यादि को वहाँ पर मिला देते हैं शहर के बीच में, वो गलत है। मिलाना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो उसको जहाँ शहर एंड हो गया, आफ्टर दिस सिटी इट शुड बी मर्ज्ड इन द रिवर, देन ओनली इट कैन बी फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. So Kalia Mardan is very important story for this regard. Dark complex, as one statue is on the road, on the entrance, there is a story. There is a statue of Yamuna Devi. So you should see that. She has a pot in her hand. She is blackish complexion, and she is mounting on a turtle. I don't know is it this Pratima is कि है कि नहीं है, लेकिन वो उसका जो वाहन है वो टर्टल है, यानी कछुआ, कछुआ. सो इसीलिए सनातन धर्म जिसको हिंदू धर्म मानते हैं, कहते हैं, उसमें यमुना जी का बहुत रिस्पेक्ट होता है. फिर आप आते हैं ट्रेडिशंस में, कल्चर में, और कल्चर में भी यमुना का महत्व तो कम नहीं है. जो दिवाली के बाद एक गोवर्धन पूजा के बाद जो भाई दूज होता है, उसमें भी यही स्टोरी है कि उसको यम द्वितीया भी कहते हैं, यमराज की द्वितीया. और उसमें यमराज जो थे वो यमी के घर गए थे, एंड दैट इज व्हाई यम द्वितीया इज सेलिब्रेटेड दैट. भाई दूज इज कॉल्ड दैट फेस्टिवल, एंड इट रिमाइंड्स दैट द होल प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द ऋग्वेद. देयर इज यम यमी संवाद सूक्त, एंड लेटर you discussed all these things. So Bhai Dooj is still we are celebrating. So this is a very continuous, Yamuna is found continuously in our culture, in our traditions. So the paper had discussed certain issues, and literary evidences are the basis of these all discussions which we have done. And in the Puranas, with what conclusions are drawn here, I am giving it them one by one. First is Yamuna is the oldest river of India because it is mentioned in the Rigved, which is the oldest scripture of the India. Then second is the nature of mingling. I have explained that. Mixing up nature है उसका, वो खुद दूसरी नदियों को अपने में मिलाती है और स्वयं अंत में गंगा जी में मिल जाती है. थर्ड, उसके किनारे यज्ञ और सैक्रिफाइस इत्यादि होते थे, एग्रीकल्चर होते थे, जो ये प्रूव करता है कि वो एक बड़े फ्लरिश्ड सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन का हिस्सा बनी थी, विटनेस थी वो
उसने बहुत सारी इवेंट्स को देखा होगा जो हमारे भारत में हुई होंगी। यमी का कंट्रोलिंग अर्थ है और यमुना अपने को कंट्रोल में रखती है। ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये टेक्स्ट आप लोग इसको वेरीफाई करेंगे। इसका मतलब ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है कि बाढ़ इत्यादि कम आती है क्या यमुना में, इसको चेक करा जाना चाहिए। देन उसके जो कहानियाँ बाद में बनाई गई उनको भी मैंने एक्सप्लेन किया कि एलिगोरी, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण या ये सब के आधार पर कहानियों को बनाया जाता है। जब गव्य कहते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे भी लगा, जो ऋग्वेद में एक मंत्र है उसमें गव्य शब्द का प्रयोग हुआ है। गोकुल की याद आ जाती है, गायों का संबंध है यमुना से, और वो गाय से दूध इत्यादि बनाना गव्य पदार्थ कहलाते हैं। तो गव्य रिमाइंड्स कृष्णा लिटरेचर एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट as Yamuna is flowing constantly, she is not लुप्ता सरस्वती की तरह या कुछ और नदियों की तरह लुप्त नहीं हुई अभी कहीं पर भी, और कॉन्स्टेंटली बह रही है। ठीक उसी तरह से जो हमारा लिटरेचर है, मैंने लिटरेचर के आपको एविडेंस दिए, जो हमारा लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर, देन संस्कृत लिटरेचर, भक्ति स्तोत्र आपने बहुत सारे सुनाए, और अभी भी स्तोत्र बनते हैं और गाए जाते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस लिटरेचर में हमें यमुना का नाम मिलता है, जो प्रूव करता है कि यमुना कांस्टेंट रिवर है, एक एंशिएंट रिवर है। सो द फाइनल सेंटेंस विल बी यमुना इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर भारतवर्ष एंड in regard to culture, history, religion and traditions. Thank you. Namaste.